In the last session, we have discussed that name manager. Today, we are going to start new topics. So let us see what is the topic today. So let us start the topic, which is conditional formatting, right? So conditional formatting is basically, if you break this, the terms conditional and formatting. So this is conditional means conditions and the formatting. So formatting based upon certain condition, formatting based upon certain criteria, formatting based upon certain logic. So that is known as conditional formatting. Let us see, start with an example. Suppose I have a data like this, pass, fail, pass, 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 fail, pass, fail, fail, pass, fail, pass. Let's say this is my data. Now I wanted to format this data in such a way where there is the pass, I wanted to color the background with green, and if the data is fail, if the value is fail, then I wanted to mark it as red color. And if the values changes, so it will automatically change the colors also. Let us see. So I'm going to show you the simple method first. मैंने बहुत सारे methods आपको बताने हैं, उस एकदम simple basic method देखते हैं. Now in the home tab, there is conditional formatting. Now under conditional formatting, there are different options: highlight, cell rules, top, bottom, data bar, color scales, icon sets, this one. So I'll go with the first one, जहां पर cell rules है, वहां पर greater than, less than, between, equals to ऐसे आ रहा है. तो I'll go with this equals to. Now this is asking कि किसके बराबर होना चाहिए, what equals to. So I'll say pass. Pass. The moment I select pass, तो automatically pass color हो जाएगा, but I don't want to color like this. I wanted to color with green. So there are pre-defined. यहाँ पर देखोगे काफी सारे pre-defined है, but यहाँ से नहीं चाहिए. I wanted my own format. So I'll going to custom. मैं जाऊंगा custom format. Now custom format में there is a fill button. I'll mark with this green. Click OK. Done. Click OK. So this is my first. Similarly, I will repeat the same for fail. Conditional formatting, highlight cell rules, equals to. I'll go with this fail. Same thing. Custom format. Red fill. Red fill के साथ font में जाता हूं, and font let's make it as white. So it will show like this. Font color white and fill color red. Now let's see the magic. This is pass. I'm going to change it to fill. Automatically red. This is fill. I'm going into pass. Automatically green. So this is known as conditional formatting. So what I have done, I have selected the data. I have been clicking on this, highlight cell rules, equals to pass, and then custom format, then green color, and then OK, and OK कर देंगे, so आ जाएगा. Similarly, I'll repeat the data for fill. This is clear? सबको clear है? Now this was the first method of doing this. Let us see another way, another approach of doing the same thing. Let us see. Now I'll go with this conditional formatting. It's asking new rule. यहाँ पर जाऊंगा new rule. I'll not go with this option. New rule में it's showing different options. Format all says based on their values, contains, top, bottom. मतलब यहाँ पर जो थे ना drop down में वही मिलता जुलता यहाँ पर भी है. So I'll go with the second option, which is common. Cell value आप देख रहे हो, equals to, not equals to, there is the option. So I can go with this equals to. I can write pass here. Pass. Format, I'll go with the same process, green. Click OK. Done. I'll repeat the same thing for second, equals to, fill. Format, red font, red color, and font, let's make it as white. Click OK. Both are same. This is clear? Both are the same thing, just the method of doing is different, but ultimately the output is same. Let us see third method.
I'll go with this one. I'll go with manage rules, and this is the best option. Manage rules. Under manage rules, it's asking, see, as the name specify, नाम से ही लग रहा है कि it's not only to create rules, we can also manage the rules, means delete the rules, edit the rules, everything. Whenever I am going to select this one, आप देखो ध्यान से, यहां से जैसे मैं select करूंगा, I am going to manage rules. So what it will show? It will show the records that I have already done. तो यहां से मैं edit भी कर सकता हूं. I can change it. I can change, even I can delete. So this is the option where I can create this one. मतलब यहां से हम जा सकते हैं, यहां से edit कर सकते हैं, यहां से delete कर सकते हैं. Now let us use the same rule for this also. So manage rules. It's showing new rules and वही same window आ गया. देखा आपने, the same window जो आ रहा था. But इस टाइम मैं इसमें नहीं जाऊंगा. I'll show you the best option, which is use a formula. This is the best option. Formula से आप कुछ भी कर सकते हो, anything. Now it's showing format values where this formula is true. मतलब एक ऐसा फॉर्मूला आपको लिखना है जिसका वैल्यू ट्रू होना चाहिए. The value must, the formula must return true. So how it can be done? So equals to this one. I'll select the first cell only. This is the rule of conditional formatting, that in the formula part आपको सिर्फ फर्स्ट सेल को ही सिलेक्ट करना है. और इसमें फिक्स किसको होगा बताइए, क्या फिक्स होगा, रो या कॉलम? व्हाट इज टू बी फिक्स? कॉलम. यस, कॉलम इज इक्वल्स टू पास. बस अगर पास होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा. एंड व्हेन द वैल्यू इज ट्रू, सो इट विल फॉर्मेट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. सो लेट अस सी, फिल में जाते हैं, यहां पर क्लिक ओके, क्लिक ओके. सो दिस इज माय फर्स्ट. What I can do, I can go with this duplicate. Duplicate is not there in the earlier version. So अगर मुझे duplicate नहीं करना, I can go with this new rule. Use a formula equals to this equals to fill. This. Now after doing this, it's showing the range also कि कहां पर apply करना है. From this, I can increase or decrease the range. So this is the best method. This manage rules is the best method. And under manage rules, this formula is the best one. और formula वाला ही आपको practice करना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं. Click OK, done. See, whenever I am going to this and I am going to manage rules, so it will show this option जो हमने किया था, right? इसमें भी वही option दिखेगा. And in this also, we are getting the same option. Right. But in the third one, I'm getting different options because I've used a formula. So मुझे formula ही दिखेगा, formula. This is clear. All the three are clear. चलिए. Now let us use the formula method. या एक scenario देता हूँ. Let us see one scenario and let us see कि किससे हो सकता है, first, second और third. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. और इनके आगे पास फेल लिखा हुआ है. Now I wanted to color the entire row. Right. I wanted to color the entire row. Now the rule is for each and every conditional formatting, the rule is same कि आपको select करना पड़ेगा पूरा. You have to select the entire thing. अब आप बताओ तीनों में से कौन से ऑप्शन से ये होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड होना है. फर्स्ट सेकंड से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज फर्स्ट सेकंड विल ओनली कलर दिस सेल, ए को कलर नहीं कर पाएगा. बट इफ आई एम गोइंग टू यूज ए कंडीशनल बेस्ड फॉर्मूला तो कर सकता है. लेट अस सी. सो फर्स्ट मेथड इज टू सिलेक्ट दिस वन, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज टू गो टू मैनेज रूल्स एंड आई विल गो विथ न्यू रूल एंड यूज अ फॉर्मूला. इन दिस वन द रूल इज सेम, इक्वल्स टू दिस आई, और आई को फिक्स कर दूंगा. जिसके बेसिस पे भी कंडीशन है उसको सिलेक्ट करना है, खत्म. इक्वल्स टू पास. एंड इफ दिस इज पास, देन आई विल यूज द सेम कलर. लेट अस गो विथ द न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला इक्वल्स टू दिस वन is equals to fill. Then format is red, font is white.
Done. So this is how I can create an entire row. मैं formatting पूरे रो में लगा सकता. अभी 2 कॉलम है, 10 कॉलम भी होता तो 10 कॉलम में आया. It will fit the entire thing. Now, suppose these are few numbers. Random numbers ले लेता हूँ. Now I wanted to highlight top 3. टॉप 3 को हाईलाइट करना है. कैसे करेंगे बताइए. So I'll go with this one. यहां पर आ रहे हैं टॉप बॉटम रूल्स. इट्स कमिंग हियर ऑल्सो, इट्स कमिंग हियर ऑल्सो. मैनेज रूल्स में भी न्यू रूल में जाएंगे. सो टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यूज आता है. तो इसी से करते हैं. सो टॉप 3, top 3 is this one. Format, fill, this one. I can also change the font color. तो मैं कर देता हूँ top 3 को इसको. Done. Top 3 95, 83 and 69. अब मैं करता हूँ 99. यहाँ पर करता हूँ आपका let's say 99. So automatically top 3 will change. It will work dynamically. इसी तरह से बॉटम के लिए कर सकते हैं. दिस इज बॉटम. ये क्लियर है. अब बताओ इसको फॉर्मूला से कैसे करें. हाउ टू डू दिस यूजिंग अ फॉर्मूला. टॉप 3 का मतलब क्या हो गया. टॉप 3 आर दोज नंबर्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थर्ड हाईएस्ट नंबर. यही तो है ना टॉप 3, कि थर्ड हाईएस्ट नंबर के बराबर या उससे ज्यादा जो भी नंबर है वो दैट इज इन टॉप 3. क्लियर. कंसेप्ट इज क्लियर. ग्रेटर इक्वल्स टू थर्ड हाईएस्ट मींस टॉप 3. या कोई डाउट है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड हाईएस्ट. क्लियर है ना. सर लार्ज फॉर्मूला. Third highest. So this is showing 83 is the third highest. Right. Now all the numbers which is greater than or equals to 83, 83, 99 and 95 are the top 3. So क्या करेंगे. If this is greater than or equals to third highest, तो अब देखिए ट्रू 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 आएगा. 3 जाएगा. This is true, this is true and this is true. बस यही तो करना है फॉर्मूला से. Let us see. Now the shortcut for manage rules. Manage rules का shortcut है Alt OD. Alt OD. One after another. One after another. Alt OD. Now I'll go with the use the formula equals to this number. I'll fix the column only. Is greater than equals to large of this comma 3. Format this one. Similarly, I can go with this one. Less than equals to third lowest number. स्मॉल कर देंगे. Red. Done. Now let us see one dynamic use of this formula. Now in this one, we have used top 3. So in similar condition, we can highlight top 2, top 4, top 3 like this automatically. Let us see how to do this.
So in place of 3, I'll just select this one, this cell. Click OK. In place of 3, I'll just select this. Now this is showing third lowest and third highest. 2, second highest and second lowest. 1, top highest and top lowest. 5, top lowest and top highest. 5th. So this is what I have done. I have directly selected this cell instead of writing 1, 2, 3 manually. बार बार आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक कीजिए. अब इसमें और एक चीज कर सकते हैं विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन दे सकता हूँ. अभी ड्रॉप डाउन में आपको सिखाऊंगा नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में है. सो 1, 2, 3, 4, 5. अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना भी नहीं है. We can do like this, right? Yeah, So sir. this is data validation, which we will learn in the next topic. So देखा आपने, this is basically the use of or understanding the formula. Formula से आप कुछ भी कर सकते हैं. There are lots of scope in formula. Now let us see another thing. अब आते हैं. I wanted to highlight the duplicates. So conditional formatting, highlight cell rules, duplicate values. बस हो गया. Custom format, we can highlight with yellow color. Let's see. So this is C and C, H and H. अगर मैं एक H की जगह कुछ और लिख देता हूँ, so ये duplicate हट गया. So this is the duplicate. Highlight duplicates. चलिए, this is very simple option. Now, I wanted to create a bar. अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं, डायनेमिक, which is creating a bar. Bar means let us see क्या है. So with conditional formatting, it's showing data bars like this, right? So I'll go with more rules. Data bars क्या करता है, डैशबोर्ड की तरह होता है. So this score is out of 100. So if the score is 100, then it will full color the cell. Color पूरा full कर देगा. If the score is 50, then 50% of the cell would be colored like this. Let us see. So I'll go with conditional formatting, data bars. Let us go with the more rules. Now it's asking that what is the minimum and what is the maximum. So my maximum is a number and minimum is a number. So minimum is 1 and maximum is 100. Out of 1 to 100. अगर 1 से 10 होता तो 1 और 10 होता. Now it's asking which color. So I wanted to use, let's say, green color. It's asking solid fill. ये ऐसे solid दिखाना है और gradient fill. कुछ ऐसा gradient. So मैं dark कर लेता हूँ. Let us mark it in gradient like this. इस तरह से करते gradient. Now let us click OK. So it will show like this. If this is 95, this is 50. So it will show 50% green. अगर होगा 100 then 100. 1 में क्या होगा, नहीं दिखेगा. 2 में थोड़ा सा दिखेगा. 100 like this. 90 like this. So this is showing graph. I can left align this numbers. Numbers को मैं इधर रख सकता हूँ. Right. Even I can change the direction of graph. एक बार देखते हैं graph का direction कैसे change होगा. So graph का direction यहाँ से change होगा. Conditional formatting, manage rules. From this one, it's showing bar direction. I'll go with right to left. Like this, right to left. Even I can use this technique. एक बार दिखाता हूँ मैं. एक काम करते हैं. Let us mark it as blue. Blue करते हैं and gradient fill की जगह कर देते हैं solid fill.
Let us see. So this is solid fill, this is gradient fill. Now let us see more variety. We can go with this gradient fill, let's say, or border कर देते, solid border. Let us change the color, dark blue, like this. इसको और light कर लेते हैं. We can go with this, or let's simple, we can go with this. ये हो गया. So various formats. Now in this one, there is another format, which is if I wanted to show only the graph, not the numbers, show bar only. So show bar only option is there, which is show bar only. So in this case, numbers will not be shown, only the bars. सिर्फ बार दिखेगा, नंबर दिखेगा आपको ऐसे, या नंबर will show in the formula bar. So these are the few varieties. This is clear everybody? यहाँ तक clear है? एक क्वेश्चन है. Suppose I wanted the number should be appeared in the first cell. Number मेरा यहाँ होना चाहिए and graph should be in this one. So two different columns में होने चाहिए. First is the number, second is the graph. कैसे होगा बताइए? How to do this? So cell referencing. Cell referencing. See, this is very much clear that the graph would be plotted in the same cell where number is there. ऐसे नहीं हो सकता कि नंबर यहाँ पर है तो ग्राफ यहाँ पर नहीं. If the number is there, then the graph would be plotted in the same cell. So what trick I can use? I can use like this, equals to this. So it will pick the number that I'll write here, it will pick the same number. Now I'll be using the same concept. इसमें लगा दिया, so bar only कर दिया. Now if the value is going to change, let's say 90, so automatically it will also change. Right, I have selected this one and यहाँ पर क्या कर दिया, so bar only, and this is the number where I wanted to change. Clear? Now let us go into the another format which is known as a heat map. Data bars बोलते हैं, data bars, not color labels. Heat map का मतलब क्या हो गया? Let us see. Suppose we have month like this, Jan, and these are the north, east, west, south, central, north, east. Now let us enter some value. यहाँ पर कुछ सेल्स का वैल्यू देते हैं. Let's suppose these are the sales equals to rand, not rand between 100 से 999. Let's say these are the sales figure. And I am not going to change the value. Fix नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको random ही रख रहा हूँ ताकि मैं F9 से मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ randomly. Now I wanted to show कि किस जगह पे सबसे ज्यादा सेल हुआ है. That I wanted to mark it is in green color and the lowest sale is red color and in between it should change the color. तो color grades दिखना चाहिए, varies from green to red. Let us see. So this is known as color scales. So I can mark 2 color scales, not 3 color. 3 color कर लेता हूँ. This is number. This is, let's say, number. Let's say the sale starts from 100 and this is to 999. This is the sale figure. अगर आपका sale figure fix नहीं है, so we can make it as highest and lowest. Right? Now this should be green, this should be red, and in between this should be yellow, like this. Click OK. ये क्या हो गया?
100 से 999, मिनिमम नंबर, मिड पॉइंट 50% ले लेते हैं, एंड दिस इज 999. नाउ इट्स वर्किंग. F9 देख लो, सबसे जहां पर ग्रीन है इट मींस हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, जहां पर रेड है वहां पर लोएस्ट की तरफ जा रहा है, और जहां पर ऑरेंज है दिस इज इन बिटवीन. सो दिस इज नोन एज कलर स्केल्स. देख के पता चल जाएगा दैट हाउ द डेटा इज देयर, डायरेक्ट पता चल जाएगा. दिस एरिया, ये एरिया आपका रेड है, मतलब यहाँ पर लो है हुआ है सेल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर. This color scales is clear, and we can even mark it as automatically ताकि आपका बढ़ता रहे घटता रहे. Let us see. लोएस्ट वैल्यू ले लेता हूं और ये हाईएस्ट वैल्यू, और ये 50% में जब होगा तो ये होगा. सो दिस इज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होगा, राइट. अगर मेरा 5000 हो गया कहीं पर, सो देखिए क्या होगा. दिस वुड बी ग्रीन और ये सारा आपके रेड में होगा, ये येलो होगा. सो दिस इज ऑटोमेटिक. So this is known as color scales or heat map. Now let us move into the icon sets. Icon sets means if the number is greater than equals to 80, then tick mark. If the number is between 60 to 80, then exclamation sign. And if the number is less than 60, then cross sign आना चाहिए. तो icons आना चाहिए. Like this. This is the icon sets. So different icon sets is there. I'll go with more rules. Now in the rules, it's showing different types of icon sets. 3 का है, 4 and 5 icon sets, even 5 up to 5. Now let us start with this one. So if the number is greater than equals to 80, then tick mark. If the number is greater than equals to 60, then cross sign, and less than 80 greater than equals to 60, then you are. And if the number is less than 60, then cross sign. Bas, at any point of time you can change the icon of anybody. Any icons को आप change कर सकते. You can also do the reverse अगर करना है, उल्टा. But this is the thing that I wanted to do. Click OK. Done. So this is 18. Let's mark it as 95. 95. So tick mark. Let's mark it as 67. Exclamation. Let's mark it as 18. Clear? This is clear? इसी तरह का एक और वैरायटी है सेम. अब मुझे क्या करना है, मैं काम करता हूं, इसी को अप्लाई कर देता हूं. फॉर्मेट पेंटर्स आप अप्लाई कर सकते. नाउ वी कैन गो विथ एडिट रूल. यहां पर आ रहा है शो आइकन सॉन्ग, तो आप सिर्फ आइकन दिखा सकते हैं. एंड इन द सिमिलर मेथड वी कैन यूज लाइक दिस, जो हमने पहले किया था कि यहां पर आपके वैल्यू रहेगा और यहां पर आइकन्स रहेगा. सो आई कैन यूज दिस कंसेप्ट. दिस इज क्लियर. यहाँ पर 90 की जगह मैं कर दूंगा 70, तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. 20 ऑटोमेटिकली चेंज. Even we can filter. Let's say these are the score and this is the status. We can also filter like this. अब देख रहे हो फिल्टर बाय कलर, तो मैं टिक मार्क को कलर फिल्टर करना चाहता हूँ, टिक मार्क हो गया. We can also filter by red. So these are the things that. Now let us see one example. Suppose this is the date. Now I wanted to use a tick mark in this column. यहाँ पर क्या करना है, in this cell, if the date is current date, then it should show tick mark.
और अगर करेंट डेट नहीं है देन इट शुड शो क्रॉस साइन। बताइए, लेट अस सी। इक्वल्स टू इफ this is equals to today, then let us mark it as 100, else 0. So ये 100 होगा या 0 होगा, simple. Because to use this icon sets we must define a number. Icon sets does not work with text. Text के साथ काम नहीं करता, only number. So let us see. Sorry, icon sets. Let us use this one. Number. If the number is greater than equals to 100, मतलब अगर 100 है तो टिक मार्क, and else अगर है तो 0 में ये. So I wanted to change it to cross sign, and less than 0 no cell icon. So I can customize this one कि 100 अगर है then tick mark, and less than 100 then cross sign, and I'll go with show icon only. सिर्फ icon दिखाना है. Done. Now let us change the date, 12 Jan. Now let us see another example. I wanted to use tick mark for pass and cross sign for fail. So equals to if this is equals to pass, then 100, else 0. So I'll be using the same concept here also. This one, fail, cross sign. So we'll have another session for conditional formatting. एक और सेशन लगेगा जहां पर we are going to use and or type of things. We are going to use create attendance tracker. We are going to see how to work with dates. तो एक और क्लास लगेगा conditional formatting का, and we will see more examples, more advanced examples of conditional formatting.